Hello dear students, this lecture is in the continuation of lecture 4. In lecture 4, we were discuss about the some terms which are frequently used in Java. Like in lecture 4, we were discussed about what is JDK, Java Development Kit, what is API, Application Program Interface, and in lecture 4 मैंने आपको जितनी भी JDK की कमांड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं उनको विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। नेक्स्ट जावा एनवायरनमेंट के अंदर एक टर्म आता है API। जनरली हर लैंग्वेज के अंदर हम इनबिल्ट लाइब्रेरीज के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नाउ द जावा API हैविंग थाउजेंड ऑफ क्लासेस एंड these थाउजेंड ऑफ क्लासेस हैविंग millions of methods. Now all these classes are divided into some categories, right? These categories available in the form of packages. That means the inbuilt library is available in the form of package. Now the most commonly used packages are like language support packages. That is इसको हम generally लिखते हैं, जब import करते हैं तो लिखते हैं java.lang, right, like this. तो दिस इज लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज, राइट, और ये सभी स्मॉल लेटर्स में आएगा, राइट, ओके। तो दिस इज लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज। जनरली प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी मैंडेटरी क्लासेस हैं, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज लाइब्रेरी, ऑल दीज मेथड्स आर अवेलेबल इन java.lang पैकेज, लाइक सिस्टम क्लास, लाइक स्ट्रिंग क्लास। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर आप स्ट्रिंग क्लास यूज करेंगे, राइट, और हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन होना जरूरी है। विदाउट फंक्शन यू कांट रन एनी प्रोग्राम, right? If you want to display something, you have to use println statement, and println statement can't be used without system class. You have to write system.out.println, right? So these two classes at least we required in every program, and that's why you must import java.lang package, and that java.lang package is implicitly available. So don't worry, आपको इसको import करने की, explicitly import करने की जरूरत नहीं है। Next is utility package, right? इसको हम इंपोर्ट करते हुए लिखेंगे java.util, राइट, इट इज ए यूटिलिटी पैकेज। जितना भी डेट टाइम रिलेटेड फंक्शंस हैं, स्कैनर क्लास है, यूजर से इनपुट करने के लिए जो हम क्लास यूज करेंगे, तो ऑल दीज क्लासेस आर अवेलेबल इन java.util पैकेज, राइट। तो डेट रिलेटेड फंक्शन, टाइम रिलेटेड फंक्शन, या आपको यूजर से कुछ भी इनपुट करना है थ्रू कीबोर्ड एट रन टाइम, तो उसके लिए भी आप स्कैनर क्लासेस का यूज करेंगे और वो java.util पैकेज में आएगा। All the IO related functions, input output functions, like if you want to write something in a file, if you want to read something from a file, either through either in binary mode or a text mode, right, you can take byte stream or byte stream classes, right. Now another is even if you want to write anything on a socket of network, again you required some IO statement. तो ऑल द IO रिलेटेड स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल इन IO पैकेज, राइट। तो उसके लिए हम लिखेंगे java.io, इंपोर्ट करते वक्त क्या लिखेंगे java.io, राइट, गॉट इट। नेक्स्ट नेटवर्किंग का पैकेज है। अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप करना चाहते हैं, आइदर ए सिंगल वे और टू वे, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ क्लासेस, राइट, and inbuilt classes, and all these all these network related classes are available in java.net package, right. In that case you have to import that package java.net. Next, if you want to create a dynamic content and want to embed that dynamic content in HTML page, in that case you have to create a applet having their own cycle, right. It is totally different from traditional Java programming, because in applet there is no public static void main method. So if you want to create applet, in applet you can create you can use colors, text, sound, videos, everything you can use in applet. Now applet बनाने के लिए आप लिखेंगे java.applet, right, got it। तो ये सब पैकेजेस के नाम है जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इनको आप यूज करेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जावा इनबिल्ट लाइब्रेरी, राइट। इसके अलावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए JDBC पैकेज है, राइट, AWT स्विंग्स,
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ओवरव्यू दिया था सिलेबस का, उसमें AWT के बारे में बोला था, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। अगर आपको कोई GUI प्रोग्रामिंग करनी है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट लाइब्रेरी। तो देयर लोड्स ऑफ लाइब्रेरीज, लोड्स ऑफ क्लासेस आर अवेलेबल एंड ऑल दीज क्लासेस आर arranged in a package and you have to import that package according to your requirement, right? Now the next is Java runtime environment, JRE, right? JRE basically provide you a mechanism or provide you an environment to run your program, right? And this JRE having two modules, one is JVM, another is runtime class library. JVM convert your bytecode file into machine code, right? And the minimum it also allocate a memory to run your machine code. That means minimum memory required to run your program, it is allocated by or calculated by JVM, right? Now apart from JVM there is another module that is called runtime class library. All these are the core class library and these libraries are mandatory or it is required for the execution of any Java program. Without this library you can't run any program. So when I am talking about JRE having JVM and runtime library, right? Okay. Now next इसके अंदर एक पार्ट होता है यूजर इंटरफेस टूल किट. विद द हेल्प ऑफ दिस टूल किट हैविंग ऑल द क्लासेस, all the methods required to create a GUI, graphical user interface. You can create buttons, menus, pop-ups, drop-down menu, text area, everything you can create with the help of these toolkits. So in these toolkits there are two different kind of library. One is AWT, abstract window toolkit, another is the Sphinx. Sphinx is lighter than AWT in terms of memory. Clear? Okay. Now next important part is Java virtual machine. Right? That is very important, right? Without if you are not aware about the internal architecture of Java, you are not understand the concept of how Java is platform independent, how Java is architecture neutral, how Java is faster than any other language, right? So at least you have to know all the internal architecture of Java virtual machine. Now here you can see this is the internal architecture of JVM. So basically JVM is the heart of entire Java program execution process, right? That means it is the heart and soul of the execution process. First of all, in their very beginning, when you create a source code with .java extension, after compilation you get .class file, and that .class file having bytecode instruction generated by compiler. Now the Java compiler is not a part of JVM, right? Understand? Java compiler is a separate thing, JVM is a separate thing, right? So after compilation you get bytecodes, that means .class file. That .class file is used by JVM, right? तो JVM को इनपुट कहाँ से मिलेगा? .class file से. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई एक प्रोग्राम बनाया demo.java, and after compilation with the help of javac command you get another file that is called demo.class. That demo.class file having contain bytecodes. Now that bytecodes is given to JVM, right? So in their first step JVM basically mainly perform some operations, like for example it allocates sufficient memory space for all the classes attributes, all the class attributes. एक क्लास के अंदर जितने भी attributes होंगे जिसको मेंबर वेरिएबल्स बोलते हैं उन सबको मेमोरी एलोकेट करेगा. प्रोवाइड नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा? इट प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड. अब बाइट कोड जब मशीन कोड में कन्वर्ट होंगे उसको कुछ मेमोरी चाहिए होगा, कोई सीपीयू टाइम चाहिए होगा, तो इट प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स to the program. Now after converting bytecode instruction into machine code level instruction, right? When it also convert bytecode instruction into machine code instruction and execute it. Clear? Now JVM is separately available for every operating system, right? मैं ऑलरेडी आपको जब मैंने जावा के फीचर्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था
हर सिस्टम का अपना अपना जेवीएम होता है, दैट मीन्स इट इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट जेवीएम होगा, लाइनक्स के लिए डिफरेंट, उबंटू के लिए डिफरेंट, राइट, मैक ओएस के लिए डिफरेंट। तो दैट मीन्स जेवीएम इज बेसिकली ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम, राइट, बिकॉज फॉर एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम there is a different JVM, right, and that platform dependent program make Java program independent, right, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर JVM इंस्टॉल करने से क्या होगा, आपको सिर्फ डॉट क्लास फाइल उसको देनी है, एंड डॉट क्लास फाइल के अंदर बाइट कोड्स होंगे, एंड बाइट कोड्स को JVM इंटरप्रेट करेगा और मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, राइट। ओके, तो नाउ इसका आर्किटेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम के अंदर एक मॉड्यूल होता है दैट इज कॉल्ड क्लास लोडर सबसिस्टम। सबसे पहला इसका काम क्या होता है, इट सिंपली रीड ए बाइट कोड फ्रॉम द डॉट क्लास फाइल। हार्ड डिस्क के अंदर डॉट क्लास फाइल होगी, उसके अंदर से बाइट कोड्स को रीड करके मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड it simply load the dot class file into the memory. So that is the first function of class loader module, right? तो JVM के अंदर आप देख रहे हैं different modules हैं, तो I am talking about the first module that is called class loader subsystem. इसने सबसे पहला काम किया, it read a byte dot class file and load it into the memory, that means in the RAM, right? Then it verify whether all bytecode instructions are proper or not. हमने जो डॉट क्लास फाइल हमने जो मेमोरी हार्ड डिस्क से रीड किया और मेमोरी में लोड किया है, राइट, तो उसके अंदर क्या सारे बाइट कोड्स ही हैं। इफ इट फाइंड एनी इंस्ट्रक्शन सस्पिशियस देन एग्जीक्यूशन इट विल सिंपली रिजेक्ट द एग्जीक्यूशन, इट सिंपली द एग्जीक्यूशन इज रिजेक्टेड इमीडिएटली, राइट। ओके, तो दैट मीन्स देयर इज नो चांस टू रन एनी अदर कोड अदर देन बाइट कोड। तो बाइट कोड के अलावा कोई और कोड रन ही नहीं होगा, क्योंकि जेवीएम इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड ओनली बाइट कोड। तो देयर इज नो चांस ऑफ एनी वायरस, क्लियर। नाउ इफ द बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपर देन इट एलोकेट नेसेसरी मेमोरी टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, दैट मीन्स द मिनिमम मेमोरी, इट एलोकेट मिनिमम मेमोरी टू रन योर प्रोग्राम, राइट। तो हमने क्लास लोडर सबसिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या थे, first it load the dot class file into the memory, then verify all the bytecode instructions. Second, third function क्या था, after verified all the bytecode instruction, it simply allocate a memory required to run a program, and that is the second module, required memory. These required memory having 5 different subsections, right, and that is called runtime memory area. Runtime memory area means the memory required to run your program, right, that's why it is called runtime memory, right. Now इसका मतलब ये नहीं कि आपकी RAM अगर 8 GB की है तो now 2 GB is used by for example your operating system, the rest of the memory is available to you or your program. No, that rest of the memory is not available for your for the execution of your program, right. Class loader calculate with the help of some formulas and it generate a memory to run your program, right. These runtime memory having 5 different sections, right. Now what is the use of this 5 different section? One is heap area. All the object जितने भी क्लासेस होंगी आप बनाएंगे, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उन क्लासेस के अंदर आपको अगर एट्रीब्यूट्स को, दैट मीन्स मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस को यूज करना, तो इन दैट केस यू हैव टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्टेंस वेरिएबल, राइट, उस ऑब्जेक्ट के जो मेंबर वेरिएबल होंगे, दैट मीन्स क्लास के अंदर जो मेंबर वेरिएबल हैं, लाइक स्टूडेंट एक क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, मेंबर वेरिएबल्स हैं, नेम, राइट, रोल नंबर, कोर्स, फॉर एग्जांपल ये उसके वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट 1, सपोज एग्जांपल S1 स्टूडेंट बनाया, S1 का भी रोल नंबर होगा, नेम होगा, क्लास होगा, कोर्स होगा। S2 कोई स्टूडेंट है ऑब्जेक्ट, उसका भी रोल नंबर, नेम और क्लास या कोर्स होगा। तो ये एट्रीब्यूट सबके कॉमन रहेंगे, राइट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनके इंस्टेंस वेरिएबल, तो इन रोल नंबर, नेम, क्लास, कोर्स, इन मेंबर वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे और उनके इंस्टेंस वेरिएबल, या फिर अगर आप प्रोग्राम में एरे यूज कर रहे हैं, राइट, इन सबको हम ऑब्जेक्ट कैटेगरी में या रेफरेंस डेटा टाइप बोलते हैं, राइट।
तो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस वेरिएबल एरे will get memory from that heap area. That means रन टाइम मेमोरी एरिया क्या एक पार्ट रिजर्व होगा जिसको हम हीप एरिया बोलेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को, एरेज को और इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करेगा. क्लियर? एंड जावा का जो गार्बेज कलेक्टर है, राइट, इट विल स्कैन ओनली दैट एरिया, हीप एरिया. राइट नाउ नेक्स्ट इज मेथड एरिया और स्टैटिक एरिया. अब जनरली आपने सुना होगा नॉर्मल वेरिएबल भी होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं. स्टैटिक वेरिएबल अपना प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करके रखते हैं बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल. तो यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होगा. इट बिलोंग टू द एंटायर क्लास. जनरली किसी क्लास के अंदर, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज ए क्लास. स्टूडेंट क्लास के अंदर नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, क्लास, कोर्स और यूनिवर्सिटी नेम. अब हमने ये बना दिया, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम, कोर्स, क्लास डिफरेंट हो सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी नेम इज सेम. तो मान लीजिए अगर मैं उस क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बनाऊं, दैट मीन्स 100 स्टूडेंट मेरे यहाँ एनरोल हुए, तो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना नेम, रोल नंबर, क्लास, कोर्स और यूनिवर्सिटी, ये एट्रीब्यूट्स होंगे. उनके लिए मेमोरी भी एलोकेट होगी, राइट. जबकि यूनिवर्सिटी का नाम सेम है. सबके नेम, रोल नंबर, क्लास, कोर्स अलग हो सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी नेम इज सेम. तो होगा क्या, 100 अगर हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो 100 ऑब्जेक्ट्स बनाने में क्या होगा, 100 टाइम रोल नंबर, नेम, कोर्स और यूनिवर्सिटी को मेमोरी मिलेगी. तो अगर सभी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू कॉमन है, लाइक यूनिवर्सिटी, और हमारे केस में यूनिवर्सिटी नेम में आएगा ग्राफिक यूनिवर्सिटी, सभी स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी नेम की वैल्यू ग्राफिक यूनिवर्सिटी है, तो क्या होगा, मेमोरी का वेस्टेज होगा. तो हम ऐसे वेरिएबल्स को, मेंबर्स को हम स्टैटिक बनाते हैं. तो इट एलोकेट ओनली वंस, इसको मेमोरी सिर्फ एक ही बार एलोकेट होगी अलग से, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शेयर दैट कॉमन एरिया, दैट कॉमन मेमोरी स्पेस. तो उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेंगी. क्लियर? और फॉर एग्जांपल अगर हम हिल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को डीम्ड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करते हैं, तो मुझे बस एक ही उस वेरिएबल के अंदर जहां ग्राफिक एरिया हिल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, वहां ग्राफिक एरिया डीम टू बी यूनिवर्सिटी लिखना है. तो ऑटोमेटिकली सभी ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स जो होंगे जिनकी यूनिवर्सिटी वेरिएबल की वैल्यू ग्राफिक एरिया डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो जाएगा. तो इस टाइप के स्टैटिक मेंबर्स को वैल्यूज कहां से मिलेंगी, रन टाइम मेमोरी एरिया के ये स्टैटिक एरिया से, स्टैटिक सेक्शन से, राइट. और इवन लाइक ये जो मेथड, इसको हम मेथड एरिया भी बोलते हैं. All the class level data means that belong to entire class, right, will be stored in method area or a static area. It includes static variables, static method और एक static block का भी concept आता है, वो मैं आपको बताऊंगा. Even static block main function से भी पहले execute होते हैं, right. तो इसका मैं आपको demonstrate करूंगा. तो all the static variable, static block, static methods, all they will get memory from static area or a method area. So it deal with all the members that belongs to entire class. तो अपने नेक्स्ट वीडियो में जब मैं स्टैटिक मेंबर्स पढ़ाऊंगा तो आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू एंटायर क्लास. राइट नाउ नेक्स्ट इज जावा स्टैक, थर्ड मॉड्यूल. राइट, इट डील विद मेथड्स. आप जो भी फंक्शन कॉल करते हैं, मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं, उसके अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, दे विल गेट मेमोरी फ्रॉम जावा स्टैक. तो बिकॉज the execution of every method is implement on stack, so that's why it will create it will allocate memory from that section. तो methods को एग्जीक्यूट करने के लिए यू कैन गेट मेमोरी फ्रॉम दैट area. तो उसमें लोकल वेरिएबल्स, या फिर मान लीजिए उसमें आपने कोई स्टेटमेंट दिया है c इक्वल टू a प्लस बी या c इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2. तो इस एक्सप्रेशन में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड स्टैक. एक तो लोकल वेरिएबल होंगे, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी जनरेट होंगे उनको स्टोर करने के लिए. तो या फिर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है उसके लिए भी जो मेमोरी एलोकेट होगी वो सभी की सभी जावा स्टैक से, जावा स्टैक सेक्शन एलोकेट करेगा. नेक्स्ट आता है पीसी रजिस्टर्स. ईच थ्रेड विल हैव सेपरेट पीसी रजिस्टर. ईच थ्रेड मीन्स, या थ्रेड मीन्स एक प्रोसेस की बात कर रहा हूं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू Java is a multitasking language, right? Java having the concept of multi-threading. That means you can run more than one task, you can run more than one process, you can execute more than one process, and there is a process का एक नया दूसरा नाम होता है thread. I will explain you what generally
process and thread both are same, but logically both are different, right? I will explain you when I will teach you multi-threading. तो now, तो every thread, if you are for example आपका application multitasking है, multi-threading है, तो each thread having separate PC register, जिसको बोलते हैं program counter register. That program counter register hold address of current executing instruction. जो भी स्टेटमेंट अभी रन हो रही है उसका एड्रेस स्टोर करेगा. वंस द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द पीसी रजिस्टर विल बी अपडेटेड विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. दैट मीन्स ऑटोमेटिकली पहला इंस्ट्रक्शन रन होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने अंदर होल्ड करेगा. इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन. दैट मीन्स दैट यूज अ प्रायोरिटी फॉर द मेथड इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इसमें आता है नेटिव स्टैक, राइट? लेक्चर 4 के अंदर जब मैंने जेडीके के बारे में बात करा था, तो जेडीके के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी अभी बताया. इस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं, लेक्चर 4 पार्ट 1 के अंदर, राइट? उसके अंदर आपने एक जगह हमने यूज किया जावा एच. जावा एच इज यूज्ड टू कन्वर्ट टू जनरेट हेडर फाइल्स. दैट मीन्स यू कैन क्रिएट ए हेडर फाइल or you can convert your classes into header file and it automatically behave like a structure of C, right? तो now उसके लिए अगर आप C की हेडर फाइल्स को जावा के अंदर यूज करना जावा की क्लासेस को हेडर फाइल्स में कन्वर्ट करके C लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, इन दैट केस देयर इज ए सेपरेट सेट ऑफ लाइब्रेरी, सेपरेट मेथड, सेपरेट क्लासेस आर अवेलेबल एंड दैट लाइब्रेरी इज कॉल्ड नेटिव स्टैक लाइब्रेरी. तो ऐसे फंक्शन हेडर फाइल्स को अगर आप रन करना चाहते हैं, कहीं इंक्लूड करके यूज करना चाहते हैं, तो यू विल रिक्वायर्ड ए नेटिव क्लास लाइब्रेरी एंड द नेटिव क्लास लाइब्रेरी फंक्शंस विल गेट मेमोरी फ्रॉम दैट नेटिव स्टैक. तो दिस इज बेसिकली ए रन टाइम मेमोरी एरिया. तो फर्स्ट मॉड्यूल इज क्लास लोडर. Another module is runtime memory area. This runtime memory area is divided into 5 different sections, each section having their own specific rule, right? And third one is execution area. This execution area is basically interpreter. Here your bytecode is converted into machine code. Now here is another compiler, GIT compiler. Now what is the use of this? So now this is called execution area or execution engine. Now this execution area contain interpreter and GIT compiler. Whenever any Java program is executing at the first time, interpreter will comes into the picture and it convert one by one bytecode instruction into machine code instruction, machine level instruction. And GIT compiler, जिसको बोलते हैं just in time compiler, will come into the scene from the second time onwards. That means second time when you convert the same bytecode into machine code, right? So if the same Java program is executing and it gives the machine level instruction to the process, that means to the processor, which are available in the buffer memory, JVM will in that case JVM will create a hotspot in the .class file. That means for example आपने कोई लूप लगाया, लूप के अंदर आई वेरिएबल लिया और आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, या लूप के अंदर अपने 2 स्टेटमेंट लिए हैं, system dot out dot println A, system dot out dot println B, और लूप को आपने 10 टाइम्स लगाया. तो फर्स्ट टाइम जब प्रिंट जो A की वैल्यू प्रिंट करेगा और B की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होंगे, राइट? सेकेंड टाइम दोबारा जब वो इसी A और B को डिफरेंट वैल्यू के साथ प्रिंट करेगा, राइट? तो इन दैट केस JVM Java virtual machine जो interpreter है basically, it create a hotspot. तो it consider such kind of repetitive statement, it will consider that repetitive statement as a hotspot, right? और when and given to the GIT compiler. तो ये hotspot GIT compiler read कर लेता है, right? Understand? पहली बार नॉर्मल इंस्ट्रक्शन तो इंटरप्रेटर रन करेगा, सेकेंड टाइम अगर वो रिपीटिशन में बार बार आ रहे हैं तो इट विल बी टेक केयर बाय GIT कंपाइलर, राइट? नाउ इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं. नाउ व्हाट इज द आई विल टेल यू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ GIT कंपाइलर इज टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ योर जावा प्रोग्राम, राइट? दैट इज द मेन मोटिव, राइट? नाउ generally when you
running a program in C or C++, what will happen? Either an interpreter or a compiler, right, translate your source code into machine code, right? Understand? But in JVM, we got interpreter and JIT compiler both working at the same time on bytecode to translate into machine code. तो इंटरप्रेटर और JIT साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अभी बताया, फॉर एग्जांपल एक फॉर लूप है, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, राइट? आप C में भी एज्यूम कर सकते हैं, और इसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट प्रिंट की हुई हैं. वन इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ A, अनदर इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके अंदर हमने B का वैल्यू प्रिंट किया हुआ है, राइट? एंड इसको हम 10 टाइम रिपीट कर रहे हैं, राइट? नाउ व्हेन इंटरप्रेटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, इट कन्वर्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A, दैट मीन्स जो A की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू their bytecode into machine code and give it to the microprocessor. Microprocessor को चला जाएगा. For this, for example, let's say interpreter has taken 2 nanosecond to do this, right? Bytecode को machine code में convert करने के लिए और microprocessor को देने के लिए to execute it. It will take 2 nanosecond, right? The processor take it, execute it, and it will display the value of A. So it will take 2 seconds. Now the interpreter come back into the memory, read the second instruction, that is system dot out dot println B. Again it converted into convert their bytecode into machine code. It again take 2 nanosecond. Then these instructions is given to the processor and again executed it, right? The next the interpreter come to the third instruction, which is again a looping statement, and system dot out dot println A. This should be done 10 times, and this is known as to the interpreter. Hence the first time it convert system dot out dot println statement, right? It take 2 nanosecond. After giving the instruction to the processor, it come back to the memory, again read system dot out dot println instruction. The second time it converted into again machine code. This will take another 2 nanosecond. Now suppose if our program execute in that way, so it will take near about 20 nanosecond, right? So this procedure is not efficient in terms of time. That is the reason why JVM does not allocate this code to the interpreter. In that case it will given that code to the JIT compiler. JIT compiler क्या करेगा? Let's say JIT compiler will execute the looping instruction. First of all, the JIT compiler read the value of A instruction and convert it into machine code. Let's say it will take 2 nanosecond. Then the JIT compiler allowed a block of memory and push that machine code instruction into that memory. For this, say it will take 2 nanosecond, right? So total इस instruction को run करने के लिए it will take 4 nanosecond. Now the next time when again the same instruction will read from the memory and execute it, instead of 10 times, so instead of taking 20 minutes, it will take only 4 nanosecond, and it will fetch that memory from the special area of memory and print into that. That means it will store that memory into the cache, and cache is CPU on memory, right? So in that way you can run your program faster. And third one is native library. I already told you what is the use of native library. Just go through it, all the instructions, all the statements with given here, complete architecture, right? Just go through it, right? Thank you, students.